Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, welcome to the taxation discussion. Today we are going to discuss tax year. To know about a tax year is very important. What is tax year? What is its importance? What are its types? Today we are going to discuss it in detail. It is very important theoretically as well as practically. First of all, we will discuss types of tax year. टैक्स ईयर की कितनी किस्में हैं, टैक्स ईयर क्या है, व्हाट इज़ टैक्स ईयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर डियर: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. All three types will be considered by us one by one and we will try to learn it. Normal tax year. First of all, we are going to discuss normal tax year. Normal tax year is a period of 12 months which ends on June 30th. Tax year is denoted by calendar year in which last day of the tax year falls. For example, financial year ends on June 30th, 2020, then its tax year will be denoted by tax year 21. And financial year ending on June 30th, 22, then tax year will be 22, etc. and so on. Very important to know. नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं 12 मंथ्स का पीरियड है और जून 30 पे एंड होता है और इसको डिनोट किया जाता है जिस कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जिस कैलेंडर ईयर में इसका टैक्स ईयर का एंड फॉल हो तो उस नाम से इसको टैक्स ईयर कहा जाता है. जैसे ये जो टैक्स ईयर जून 30 2021 में एंड होगा उसको टैक्स ईयर, ये कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर तक है और 2021 का, और इसको टैक्स ईयर 2021 कहा जाएगा. और जो जून 30 2022 पे एंड हो रहा है उसको टैक्स ईयर 2022 कहा जाएगा एंड सो ऑन सो फॉर. आफ्टर डिस्कसिंग नॉर्मल टैक्स ईयर, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू स्पेशल टैक्स ईयर. Special tax year, it is also a period of 12 months which is different from normal tax year. For example, tax year ending on September 30th 21 and tax year ending on March 31st 22 will be special tax years. मीन ये भी 12 मंथ्स का ही पीरियड है और इसका ईयर एंड जून 30 के अलावा किसी भी डेट पे हो उसको हम स्पेशल टैक्स ईयर बोलेंगे. व्हेन इट इज़ अलाउड टू हैव स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर कब हो सकता है, क्या आपके अपने ऑप्शन है या इसके ऊपर कोई लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेसिफाई करता है. ऑर्डिनेंस सेज देयर मे बी टू सिचुएशंस ओनली इन विच स्पेशल टैक्स ईयर यू कैन यूज. फर्स्ट वन इज when a person has different income year as per income tax ordinance 1979 as compared to normal tax year. Today we are going to discuss, nowadays we are discussing income tax ordinance 2001. Before it was income tax ordinance 79 which was repealed by ordinance 2001. अगर इनकम ईयर पुराने ऑर्डिनेंस के तहत किसी का आज के टैक्स ईयर से डिफरेंट है तो वो स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ करेगा. व्हेन कमिश्नर हैज़ अलाउड अ पर्सन टू यूज़ इट स्पेशल टैक्स ईयर, अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने किसी टैक्स पेयर को इजाज़त दे दी है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करे तो भी वो कर सकेगा. एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय टैक्स पेयर. इस पर्पज़ के लिए टैक्स पेयर विल हैव टू सबमिट एप्लीकेशन टू द कमिश्नर टू हैव परमिशन टू यूज़ स्पेशल टैक्स ईयर. ऐसे अपनी मर्ज़ी से आप जब मर्ज़ी टैक्स ईयर का एंड नहीं कर सकते. आपको नॉर्मल टैक्स ईयर ही चूज़ करना होता है जो जून 30 के ऊपर एंड हो रहा होता है. लेकिन अगर आप इन दो सिचुएशन में किसी में फॉल करते हैं तो आपको स्पेशल टैक्स ईयर की परमिशन मिल सकती है विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू. थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर
is transitional tax year. When a person changes his tax year from normal to special tax year or vice versa, it is called transitional tax year. From normal to special or from special to normal, then it is called transitional tax year. In this case, that person is allowed to use the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year starts as a tax year. This period is called transitional tax year. Very important to understand here. Period between the end of the last tax year prior to change, आपका टैक्स ईयर है उसके एंड होने से लेके, चेंज होने से, जो जिस डेट पे एंड हो रहा है वहाँ से लेके एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर स्टार्ट्स। अब आपने नया टैक्स ईयर ले लिया, परमिशन आपको मिल गई जब आपका न्यू टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है। पिछले से लेके नए के दरमियान का जो पीरियड है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोला जाएगा। इट मे बी अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स, लेकिन इसको टैक्स ईयर ही बोला जाएगा और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोला जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर इफ़ यू सम टाइम come across practical question in your exams or in practical scenario, then you must know how transitional tax year is calculated. A person has end of last tax year on 30th June 21 and now he changes tax year whose start is 1st October 21 and end is 30th September 22. As per rule, the period between the end of the last tax year and the start of the next tax year is from 1st July 21 to 30th September 21. That is 3 months. This 3-month period is called transitional tax year. आप देख सकते हैं ये 3 मंथ हैं, ये कोई ईयर नहीं है, ईयर तो साल को बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोला गया है। ये आप नो चेंज टैक्स ईयर, इसका नॉर्मल टैक्स ईयर था वो स्पेशल में गया है और 3 मंथ जो हैं इन बिटवीन पीरियड जो है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हैं। अब इसका वैसे वर्सा हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। Second example, a person has special tax year which ends on 31st December 21. Now he changed the tax year whose end is 30th June 23. As per rule, the period between the end of the last tax year and the start of new tax year, that is January 1st 2022 to 30th June 2020, it is a period 6 month. This 6 month period, यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 मंथ पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब ये भी 6 मंथ हैं लेकिन इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोला गया है। इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज वेदर और नॉट ट्रांजिशनल टैक्स ईयर is of 12 months or shorter, even then it is called tax year. These are 3 types of tax years dear we studied today. नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल जो जून 30 पे एंड हो रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर जो जून 30 के अलावा किसी और जगह पे एंड हो रहा है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जब आप नॉर्मल से स्पेशल में जाते हैं या स्पेशल से नॉर्मल में जाते हैं तो इन बिटवीन कुछ पीरियड होता है जो किसी में भी फॉल नहीं करता, उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोला जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट, आई वुड बी able to inshallah to reply you satisfactorily. Thank you. Take care. Allah Hafiz.